we are going to talk about the right to protest, because so much going on with respect to protest. So let's see with respect to what all we have to know regarding right to protest. Okay. So first of all, what is right to protest? See, the right to protest is the manifestation of the right to freedom of assembly. राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट एक तरीके से दिया हुआ तो नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज अगर लोग असेंबल होंगे तो वो और भी पर्पसेस के लिए असेंबल हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर्टेन एक्ट, रूल और एनीथिंग. फाइन. द राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो जो राइट टू प्रोटेस्ट है बेसिकली आर्टिकल 19 के अंदर आता है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक है विद इन फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंश्योरिंग राइट टू प्रोटेस्ट? द राइट टू प्रोटेस्ट टू पब्लिकली चैलेंज एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू आंसर. ये एक फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट है लोगों का. ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है. कई बार प्री में भी सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विद रिस्पेक्ट टू राइट टू वोट. उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि इज़ इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इज़ इट अ लीगल राइट. सो द थिंग इज़ कि राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट है ऑफ द पीपल दैट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक रीडिंग ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19. तो राइट टू प्रोटेस्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, Article 19 Clause 1B and Article 19 Clause 1C. 19 Clause 1A में freedom of speech and expression आता है, B में right to peaceful assembly without arms and right to form associations और trade unions. तो इन तीनों के अंदर intrinsically जो है right to protest भी आता है. तो इस basis पे right to protest is also a fundamental political right. Okay. Now बट एज वी नो दैट आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट फ्रीडम. ओके, इट कम्स विद सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. सो like other fundamental rights, right to protest is also not absolute. It's not absolute for us and also subject to reasonable restrictions mentioned under Article 19 Clause 2 and Clause 3. Clause 2 Clause 3 में जो भी restrictions दे रखी हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर हैं, इनके बेसिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाई जा सकती हैं राइट टू प्रोटेस्ट पे. कौन सी? द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, decency, if suppose your right to protest is against the decency, against the morality or in relation to contempt of court, or is it defaming someone or not, right? If it is defaming someone or it's inciting an offense, then there is no absolute right to protest for you. Okay, so the grounds of restrictions based on violation of public order can be reasonable only when there is evidence that protesters will incite lawless or disorderly acts and that such acts are likely to occur. अब इसमें जो पब्लिक ऑर्डर वाला जो प्रोविज़न है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये क्लियर किया था कि आप मेयरली ये बोल के कि जो प्रोटेस्ट है वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होगा, किसी भी प्रोटेस्ट को आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये तभी आप लगाओगे जब ये आप एविडेंस दे पाओगे. व्हेन देयर इज़ अ एविडेंस कि जो प्रोटेस्टर्स हैं दे विल इंसाइट लॉलेस और डिसऑर्डरली एक्ट्स एंड सच एक्ट्स आर लाइकली टू अकर. ये आप तभी कर सकते हो व्हेन देयर इज़ enough and sufficient evidence with you. Fine. So this is with respect to reasonable restrictions on the right to protest. Now पब्लिक प्रोटेस्ट इन इंडिया, अगर एक बार हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें, सी द बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय इट्स एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आता है, पूरा जो हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को अगर आप देखो, विद इन विच द सीड्स ऑफ अ पॉलिटिकल पब्लिक स्फेयर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वर सोन. ठीक है. Indian people fought hard and longed to publicly express their views on colonial policies, to dissent from them, to shape minds and public opinion against them. सो एक तरीके से आप देखोगे दैट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट
against the unjust rule of the British government. तो पूरा का पूरा जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रहा है वो एक तरीके का प्रोटेस्ट रहा है, ठीक है. पीपल नॉट ओनली साइंड रिट पिटिशंस बट स्टेज्ड धरनास. They held large public meetings, peaceful protests and demonstrations, even for instance in Gandhi Satyagraha. See, when there was non-cooperation movement, fine, then several kind of methods were used within that movement also, and that movement also turned violent with the Chauri Chaura incident, and the movement was called off. Then within the civil disobedience movement, there were certain places where the clashes were there, but overall the movement was quite peaceful. But in the Quit India movement, the movement was actually the violent of all the movement of Gandhi. So we can say that all these movements, not only the Gandhian movements, but different other movements that were going on within the country, even the peasant movements, fine, they were also a kind of protest against the unjust rule, unjust policies of the British government. Fine. So because क्या होता है ना, कभी कभी GS1 में या आप GS2 में भी कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो कि ये जो प्रोटेस्ट है ये this has been a part of India's political history. Fine. This is not a new phenomena that we are seeing. Pre-independence also we have seen all these things, and because the protest होते हैं, they kind of provide a safety wall for the democracy. So in this way, we can also quote our historical context within the answer. Now, see, protests have also offered points of inclusion and participation to the voices that are not part of the mainstream, as seen in the protest for creation of Andhra or the Chipko movement. Basically, what they're trying to say कि जो भी protest हुए हैं या होते हैं, कई बार ऐसा होता है, they raise those voices which have never been heard of, ठीक है, तो उन voices को भी raise करते हैं कई बार protest. So ये कुछ historical context रहा है public protest in India का. Next, making public as, now what is the significance of these protests? See, these protests, they make public as the watchdog of the government. Fine. People act as watchdogs and constantly monitor government's acts, which provides feedback to the governments about their policies. Suppose government has passed any rule or law and people start protesting against it. Not the violent one, but peacefully protest, okay? If people are raising concerns, many a times a peaceful protest also they turn to violence because of many of issues. Let's leave that thing. So when people protest, government comes to know, okay, this is the problem that people are facing, or the people are raising these concerns, so we should look at the matter again. Fine. So this is a kind of feedback which government gets from these kind of protests. Fine, regarding their policies, their actions, fine. So after the protest or during the protest, the consultation, the meetings and the negotiations, they go on and the government can rectify its mistakes also. However, resorting to violence during the protest is a violation of a key fundamental duty of citizens. आप वहाँ पे ना सिर्फ वो जो reasonable restrictions आपको provide करी गई है ना, आप उसको वायलेट नहीं कर रहे हो, आप एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी वायलेट कर रहे हो, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 51A. The Constitution makes it a fundamental duty of every citizen to safeguard the public property and to abjure violence. That we as citizens of India have to protect, have to safeguard the public property, and we have to abjure the violence. Fine. So this is how the significance of protest is established. Next thing, let's see few of the examples which we can just quote. There's power of peaceful protest was taught. सबसे पहला example तो आप बहुत आसानी से अपनी history से उठा के गांधीयन movements का रख सकते हैं, which was against the mighty British Empire. Next, उसमें ना सिर्फ हमने धरना दिया था, petitions, different तरीके के methods हमने use किए थे. फाइन. इंडिपेंडेंस के बाद में भी कई पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था 1970s में, विच वॉज JP मूवमेंट, when democracy in India was threatened due to authoritarianism of the government or during the emergency period. Okay. After that, see, एक चीज़ और है, protest is not just within the political domain. फाइन, कि सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू होगा तो प्रोटेस्ट होगा. मूवमेंट सच एज चिपको मूवमेंट, विच वॉज काइंड ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, इन द अपर अलकनंदा वैली टुक प्लेस फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन.
Then the Anna Hazare anti-corruption movement. Thousands participated in the peaceful protest. Fine. So these are few examples which just you can just quote in the essay, in the examples or anything. So let's see some of the judgments which are related. See, in this video I've tried to cover, if suppose there is any question with respect to protest, you can just tell right from the starting to the present, what is a protest, what are the different dimensions of it, do we have any historical context of it, what is the contemporary like issue or the relevance of it, and are there any judgments associated with it. Along with this, we're also going to see what are the benefits or what are the disadvantages of any sort of protest. So first of all, we're going to see the judgments. In 2012 Ramlila Maidan case, the court held that the perception of threat to public peace and tranquility should be real. For section 144 to be used, the trigger cannot be imaginary or a mere likely possibility. सी ये जो 2012 में रामलीला मैदान केस में जो हुआ था, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि अगर आपको लगता है कि पब्लिक पीस को थ्रेट होगा या जो ट्रैंक्वालिटी है, मतलब जो शांति है, पीस है, उसको कोई थ्रेट होगा, अगर ये रियल है तब तो आप सेक्शन 144 के अंदर कर्फ्यू लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अगर शायद यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया होता तो शायद यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर जो है वॉयलेट हो जाता। वो इमेजिनरी सिचुएशन आप नहीं सोच सकते हो और उसके बेसिस पे आप सेक्शन 144 नहीं लगा सकते हो। फाइन, तो ये रामलीला मैदान केस में बोला गया था। नेक्स्ट, इन मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, or Supreme Court held, although recognized the right to protest and asked the government and police to frame guidelines, but also held that the order to impose section 144 was not unconstitutional. इस केस में एक्चुअली जो सेक्शन 144 लगाया गया था उसको ये पिटीशन ये थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ, राइट टू प्रोटेस्ट है, ठीक है, और गवर्नमेंट को और पुलिस को इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस बनानी चाहिए, बट उसमें यह भी कहा गया था कि सेक्शन 144 को लगाना, कंसिडरिंग सिचुएशन ऐसी है कि लगाना पड़ेगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। सेक्शन 144 के अंदर कर्फ्यू लगाया जाता है। नेक्स्ट है शाहीन बाग जजमेंट, ठीक है, द रीसेंट वन। इसमें कोर्ट ने कहा था, द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ लॉ but made it clear that public ways and public spaces cannot be occupied and that too indefinitely, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट किया था कोर्ट ने कि हाँ, लोगों के पास पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो पब्लिक वेज हैं, वो आप इनडेफिनेटली एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाई करके नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। द राइट टू प्रोटेस्ट इन अ पब्लिक प्लेस शुड बी बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ द जनरल पब्लिक टू मूव फ्रीली विदाउट हिंड्रेंस, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, द राइट ऑफ द प्रोटेस्टर हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ द कम्यूटर एंड हैज़ टू कोएग्जिस्ट इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी वजह से जो डेली के आने जाने वाले हैं या जो ऑफिस गोइंग हैं उनको कोई इशू हो या उनको कोई दिक्कत हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये शाहीन बाग जजमेंट में बोला गया था। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू प्रोटेस्ट, और हमें इसमें ये देखना है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रोज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ प्रोटेस्ट होंगे, बिकॉज डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू प्रोटेस्ट, टू रेज देयर वॉइसेस, फाइन। सो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, जिससे रिफॉर्म्स आते हैं एंड जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। दूसरी चीज़, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस इज़ नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन्स बट ऑल्सो देयर मॉरल ड्यूटी। थर्ड थिंग, active exercise of right to protest ensures people's role as watchdogs. Already told you कि right to protest ensure people to work as watchdogs that can constantly monitor the government's acts and ensure fairness in them, ठीक है। Public participation is very very important, and this protest is also one of the tool actually through which public participate in the policy making, even in policy implementation.
The biggest weapon of public people when government in a democratic country becomes unresponsive and refuse to listen to them. If suppose the government is not listening through the नॉर्मल मीन्स और थ्रू द नॉर्मल ऑफिशियल जो भी मेथड्स होते हैं उन उसके थ्रू अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है, सो ये एक बहुत बड़ा वेपन हो जाता है लोगों के हाथ में। लेकिन सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट अनरिस्पॉन्सिव है और वो सुन नहीं रही है। सो इट कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। कई बार ऐसा होता है कि प्रोटेस्ट किया जाता है अगेंस्ट सपोज़ एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है, तब भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की अटेंशन अपनी उस डायरेक्शन में जो है लेके जा सकते हैं जो अभी तक शायद गवर्नमेंट को नहीं पता थी। ठीक है, तो इस तरीके से इट कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज अ होल। बट ऑब्वियसली जब आप आंसर लिखोगे देन देयर शुड बी अ बैलेंस। तो एक कॉन्स बताना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट हमेशा पीसफुल नहीं होते हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल है बट उसमें से एक स्प्लिंटर ग्रुप निकलता है, छोटा सा फैक्शन निकलता है एंड वो वायलेंट हो जाता है, तो पूरा जो प्रोटेस्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है, पर्पस पूरा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, देन प्रॉपर्टी डैमेज रिलेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेशंस। फिर कई बार हमने देखा है कि ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑल्सो बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज किया जाता है, तो ये कौन हो गया। थर्ड इज़ कई बार प्रोटेस्ट जो होते हैं वो पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो है उसको अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर देती हैं, लोगों को मोबिलाइजेशन करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। एंड पॉलिसी पैरालिसिस, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगें तो गवर्नमेंट फिर सही से काम नहीं कर पाएगी। राइट, आए दिन प्रोटेस्ट अगर हो रहे हैं तो पॉलिसी एक तो बनाने में प्रॉब्लम होगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्स हैं। सी आई हैव नॉट गिवन कंक्लूजन बिकॉज डिपेंडिंग ऑन the things that I have told you, you have to write your own conclusion. Fine. So these are the pros and cons with respect to right to protest, and thank you.